ठीक, तो वो निकाल निकाल के उसमें जो है उसके बाद फिर फिल्टर पे फिल्टर, फिल्टर पे फिल्टर, फिल्टर पे फिल्टर, जैसे सनी साहब की फिल्म है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फिल्टर पे फिल्टर, फिल्टर पे फिल्टर, फिल्टर पे फिल्टर मार के. And they're quiet. And she says, I can't believe we live like this. So my response to her is, we have a great life. And her response is, on Instagram. तो शूट करते करते एयरपोर्ट Actually, सच्चाई है. शूट करते करते एयरपोर्ट गए हैं, बस फ्लाइट में कैमरे को अलाउ नहीं किया था, अदरवाइज सही है, yes. वो कहीं ना कहीं आते रहते, पॉपअप होते रहते, हम लोग ध्यान नहीं दे रहते हैं, अदरवाइज वो होता रहता है. I shot? No. I didn't shoot. I was like, कहाँ shot हुआ? We were not there. तुम भी नहीं थे? You were not the part of it. मेरे दोबारा फोमो. अरे वो क्या हो रहा है? And हम निकले वहाँ से, and I looked at KK from a distance. She said, "You're looking so hot." Which is something I can never imagine. You know, you're looking so hot. हेलो गाइस, दिस इज़ योर होस्ट अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी. तो इस वक्त हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं अक्षय एंड विनीत एंड ऑल्सो द डायरेक्टर सुशी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी विद अस. सो वेलकम है आप लोगों का बॉलीवुड सोसाइटी पर. Thank you. सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस फॉर घुसपैठिया. कैसा था पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मज़ा आया. एक दोस्त मिला और you know, Urvashi Rotella is not here with us today, but you can imagine she's sitting here or in between us somewhere. You know, we had a lot of fun. बहुत मुश्किल शूट था ये और यादगार रहा और you know, इसमें परफॉर्मेंस का स्कोप बहुत है सबके लिए. तो एज एक्टर्स वी हैड लॉट ऑफ फन. अच्छा था, टफ थी जर्नी बिकॉज कुछ 32-33 डेज हम लोगों ने ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप शूट किया. इनफैक्ट आप ऐसा समझ लो कि वी आर गोइंग टू देहरादून फ्रॉम लखनऊ. तो शूट करते करते एयरपोर्ट सच्चाई है. शूट करते करते एयरपोर्ट गए हैं, बस फ्लाइट में कैमरे को अलाउ नहीं किया था, अदरवाइज सही है, yes. वहां भी शूट कर लेते और उतरने के बाद सब आगे पीछे हो गए, अदरवाइज उतरते भी शूट कर लेते. सही है. We slept, wake up in the morning and we were shooting. About 9 to 2 a.m. every day, आराम से. यही तो हेक्टिक होता है ना. ये और इसे और हेक्टिक क्या होता है? And हाँ, और He was requested. Please give me one day. because I'm like, मैक्सिमम you know, नंबर ऑफ डेज इसी के होंगे. मेरा कैसा है कि मैं चाहता हूँ कि एक 6-7 दिन के बाद, you know, 8 दिन के बाद एक दिन का मुझे ब्रेक मिले, ताकि मैं रिविजिट करता हूँ कि मैंने क्या किया पिछले 5-6 दिन, उसमें कहाँ क्या मुझसे गलत हो रहा है और आगे क्या क्या होने वाला है, उसके लिए मैं और क्या कर सकता हूँ. तो मुझे वो ब्रेक लगता है. तो ब्रेक इसलिए लगता है ताकि मेरी गाड़ी धुल सके एज एन एक्टर, यू नो. तो वो ब्रेक आई वॉज नॉट गेटिंग. और शूट भी मतलब ऐसा होता था कि 12+ hours. In 12+ fact, hours. actually, when during the shoot, no, almost like all the actors now getting tired and even in that camera said, no, I think you are getting an accident. We are all getting Yeah. How many days it took to shoot that Tamil film? Actually, it was the same amount. I think probably the same. 3 days. The most trauma I have is from that Anjuman My House. Whatever shoot we did there, no, उसमें एक्शन भी था, उसमें सारी चीजें थी. एक ही घर में. So anytime I think about that house in Lucknow, it is near Mayawati's house. Yeah. Right? Correct. Right next to Mayawati's Next to house. that. मुझे ऐसा ट्रॉमा होता है कि अरे वो घर मेरे को. We all got rooms in that house as you know, as most of vanity vans to get ready. तो जो बेड जब दिमाग में आता ना, I'm like I don't want to think about that house. जैसे कि आपने कहा कि बैक टू बैक शूट था, ब्रेक भी नहीं मिला, जब रैप अप हुआ तो हाउ वाज द एटमॉस्फेयर? उसका वक्त नहीं मिला. As chaotic because I remember I had to take another flight to shoot in Bombay in the evening and the last day of Yeah. shoot for Susi sir. We missed him. At least we had a little. Yeah. You guys did Get something? together जो normally होता है. Normally, अरे I don't missed be there. that. Because you missed it. You no? kept Yeah, that night. अरे You left. वो तो चाहिए. प्लीज बता दो ना क्या क्या हुआ. यार now massive FOMO हो रहा है यार. मुझे पता नहीं था तुम लोगों ने ऐसा किया. See, in fact, actually, it's the climax we are shooting, but we have to rush that because next day there was a schedule.
So for that, no, I have to finish his the combination shots. I have to finish it early, and then I have to finish his portion. Then I have to concentrate. It's like as a director, no, you have to divide that. It's very Yeah, always. completely. The maximum, I mean, because he's written it, he's produced it, he's directed it. I don't know how he did what he did. मैं नहीं कर पाता. तो actual secret तो आपसे पूछना चाहिए. Yes. Energy का secret क्या है? Yes, correct. See, Because that is actors yeah, थके थे, this- उनको break चाहिए था. आपने yeah, exactly. No, it just not only me. Any creator, no, that they involved in the work. I think they forget everything. Yeah, it's true. They forget everything. It's like different space altogether. So once you enter, I think you don't worry about your food. You don't worry about it because you know everybody know that if you miss that day, that's all. The same momentum. Even we have a patchwork. Actually, we had a patchwork after I think in Mumbai 3 days we had it, but I didn't get the same energy. You understand? As a maker, that speed, that energy, because the involvement of a whole team, because that regenerate the whole energy again, it's a big task. So we want to just finish it as quickly as possible, no? But whatever that speed, no, whatever finished, I think it shows there. Whatever the patchwork, it's patchwork. Patchwork we shot in Bombay? Yeah. I shot? No. I didn't shoot. I was like, Bombay कहाँ shoot हुआ? We were not there. तुम भी नहीं थे? You were not the part of it. मैं बोला मेरे दोबारा फोमो. अरे फोमो ये क्या हो रहा है मेरे साथ? Yeah. So who is there in the patchwork? Guruji? Director's portion. Okay, got it. Got it. And then the character, new character. Got it. That was Bombay. But we keep talking about your character. उसका play क्या है? कितना preparation आप सी मेरे लिए ये था कि जब ये कहानी आई तो मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा. ये आज की प्रॉब्लम भी है और अवेयरनेस के लिए ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा एक सब्जेक्ट है. और जिसके पास भी फ़ोन है वो कहीं ना कहीं इस कहानी में कुछ भी बन सकता है. जो भी किरदार है उसमें कोई भी किरदार वो हो सकता है. Yeah. डिपेंड करता है कि आपका सोचने समझने का तरीका कैसा है. बाकी थैंक्स टू सुसी सर बिकॉज इन्होंने तमिल में फिल्म बनाई हुई थी. ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स, ईच एंड एवरी सीन एंड शॉट. तो शुरुआत के 1-2 दिन थोड़ा वैसा था कि आई वॉज जस्ट सीइंग थिंग्स थोड़ा अलग तरीके से. देन फाइनली मेरा जो तरीका है कि मैं सरेंडर करके काम करता हूँ. देन आई कम्प्लीटली सरेंडर टू हिम and the credit goes to him because he was involved in writing. Even the idea came to him, then writing, then shooting, of course. And he was in dubbing, he was in editing, he was पूरी credit सर को जाती है. Actually, if you have the right performer in your hand, 50% of the work will be getting easier for the it should director. be balanced. That's all. So in fact, no, both of them, they will give a comfort to the co-actor also. I think in another interview, just Urushi credited both of them because in fact now when we are shooting the scenes with Urushi, he took the special attention to her, dialogues. In fact, no, I was so much in tension. Just please, no, you just leave. He never, because he is so perfectionist. He is putting effort to make others people also perfect. Like the same way, when there is a one important scene for him, he makes the comfort for other artists. No, when that is happening, your 50% of the work will be eased by them. If that is not there, then your work will be more. No, even he is very particular about how they are delivering the dialogue. No, there will be the counter. So he managed all the work. Especially that one particular scene where he performed with Urvashi, that is very, very tricky scene. But he made the comfort that if you see the scene, that both of them, it's like actually going against each other, but doesn't look like that actually. They performed, it's like a give and take, no? In any performance, like how you bounce, then you will get your ball, no? It's like tennis. Like that, it's bouncing. The bouncing is very beautiful. In fact, when they are acting, when they have combination scenes, that interval sequences, if you see that, amazing chemistry between them. Yeah. Actually,
I think this is the first film. I think. Yeah. But we never felt like I never felt like working that. together. Like I never felt like that. They made that ambience like that. Oh, they've known each other Since for a long it's a long time. Like that kind of a that you can see in this film. अक्षय इज वेरी सिक्योर, सिक्योर एक्टर. और ऐसे में क्या होता है कि फिर आप सिर्फ काम हम लोग करते हैं, बाकी वो रेस वेस तो कहीं रहती नहीं कि ये कुछ वो जो कर रहा है फिल्म सीन के बेहतर के लिए कर रहा है, तो ऑलवेज वेलकम होता है. बहुत अच्छा रहा हम लोगों का. एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना पहले से कि उसका Yeah. काम देखा है, वो काम जानता है, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज आल्सो अ नाइस थिंग टू ब्रिंग इनटू अ मूवी. See, normally this film thing, when there's a close-ups, the other actors they go off. In there, what I understand, because I have had a different experience with different actors. No, they never ever move inch away from the frame. They, even though they are not in the frame, they'll give a counter look or something like that. Yes, That's a kind of yes, a, absolutely. but it's very, very, very. I have to mention it actually. So that gives that when you the close up also you'll Just be there. feeling his presence Yeah, changes that it. is, when he is 10 years, he'll be standing there and then give that no. Then that actor feels that no. Absolutely. It's very, very. Since you are playing a cop, आपने ऐसे cops जो अभी present हैं उनके साथ कभी time spend किया just to know the brief about your character? हाँ, बहुत सारे, मतलब मेरे कई सारे दोस्त हैं, दे आर IPS ऑफिसर्स, और कई सारे हैं जो इंस्पेक्टर हैं, वो सब जिनको मैं जानता हूँ, मुझे लगा इनसे बात करनी चाहिए, वो सब किया था. तो कहीं ना कहीं उनको सुन के आपको समझ में आता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे आई एम एन एक्टर. मेरी अपनी एक लिमिटेशन है, मैं जो सब्जेक्ट कर रहा हूँ उसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर सकता हूँ, लेकिन पूरी दुनिया सिर्फ वही सब्जेक्ट तो नहीं, तो हमेशा कुछ नया आता रहता है. और इस मामले में हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें बहुत सारे चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज उसे हम जीते हैं एज एन एक्टर. तो कॉप मैंने कभी कभी नहीं, दिस द फर्स्ट टाइम. First time आपने किया? हाँ, और कॉप भी ऐसा है जो सिविल ड्रेस में रहता है, इज अ साइबर यूनिट को बिलोंग करता है, तो सिविल ड्रेस में रहता है, ऐसा लगता है IT का बंदा है, सिर्फ उसकी बाइक पे पुलिस लिखा हुआ है, हाँ, तो उस तरीके का है वो, जो बैग पीछे. द आइडिया, बिकॉज रियल लाइफ में सर ने वो चीज़ देखी थी कि हाउ दीज काइंड ऑफ कॉफ दे फंक्शन. तो बातचीत की, उनको सुना, जो न्यूज़ पब्लिक डोमेन में है उनको थोड़ा देखा, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स तो क्या बोलूँ, जो प्लेटफॉर्म वगैरह हैं, मैंने ये अनुभव किया कि बॉस हमारे ना बस आसपास ही हैं ऐसे खतरे, आप बस गलती करो, वो कहीं ना कहीं आते रहते, पॉपअप होते रहते हैं, हम लोग ध्यान नहीं दे रहते हैं, अदरवाइज वो होता रहता है कि कभी कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म का कुछ आया है, पैसे कमाने की स्कीम दे रहे हैं वो, फिर कभी अचानक कोई फ़ोन करके आपको पैसे कमाने की स्कीम बता रहा है, कोई आपको कुछ दूसरे प्लेजर की दुनिया में ले जाने की स्कीम बता रहा है, तो ऐसी बहुत सारी स्कीम है. आप बस वहाँ आपने दरवाज़ा खोला नहीं कि आप अटके. और बहुत सारी न्यूज़ हम लोग देखते हैं कि सो मेनी फैमिलीज उन्होंने एक्सट्रीम, अभी तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, है ना. AI तो ऐसा लगता है कि अब पता चले हम 3 हैं और अक्षय इज नॉट अवेलेबल हियर, तो AI जो है अक्षय को बना के बिठा भी देगा. अगर हो रहा है तुम्हारे इंटरव्यू पे, तो उर्वशी का कर अभी देगा, जैसे उर्वशी नहीं है, उर्वशी का AI कर देगा, AI का डीप पता ना चलता कि उर्वशी नहीं है. So, but AI जो है वो actually it's a negative point and also a positive point. तो आप किस तरह से बताएं? देखिए, कोई भी जो कहा जाता है ना, कोई भी शक्ति अगर आप उसका इस्तेमाल करना जानते हैं तो वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को आसान कर देती है. लेकिन किसी भी शक्ति का अगर आपको इस्तेमाल नहीं आता तो फिर वो विध्वंस लेके आती है. ये शक्ति का नेचर है. तो since आपने ये पूरा स्टोरी बनाया है, आपने ऑब्वियसली सोचा होगा, रिसर्च किया होगा, और ऑब्वियसली ऐसे कोई रियल इंसिडेंट भी आपने सुना होगा स्टोरीज. क्या कुछ आप कहना चाहिए इस बारे में? How do you See, basically, every film, the baseline they took it from somebody's experience or some they hear some stories. Then I think 20% will be the real, and then 80% will be the fiction. So here, what today's country, newspaper, modern stories,
circumstances, every 10 person, if you pick up 10, I think out of them at least 2-3 people they suffered heavily by this of scams or the intruders. See, intruders know what is the intruder? Intruder are faceless. They don't have face. No? Anybody can enter into your life. That is happening rapidly. That growth is unimaginable growth because the usage of internet is high. That data and everything, you know, what we are sharing in the social media, we never bother about it. No, you are telling almost you have how many family members, what is the income, everything. The data is available. If anybody wants to use it, and then they can easily you are giving access to them. That is the, I think, this is one of the biggest threat of the century. So now we are making the film only that because this is a burning issue. We are not going to preach at least these characters. If you see the characters are suffering, then you will understand the okay. At least when you are sharing some information, then you should be a little more careful. That awareness we are making through the film because we gone through this kind of experience. Not one. Every family there is a one episode of this social media. Maybe the reported is only very minimal. The people are scared about the society. There's people who are other relatives what they think about me. My friend what they think about me. So they actually suppress their feeling. Oh, I think I read one study that mental issues in India, almost out of 3, it's one person is mentally disturbed person is. So maybe because of this social media. Even for one post, if you are putting, if I see that costume of yours, then I'll get into the depression. Oh, I don't have the costume. Like that's many kind of a mental. No, that is a different. But the mental depression goes, and that will reflect in a family life. That will reflect into this kind of you are switching over the directions to all this because of this influence made by this media. So all these problems, what we have gone through the society, just we are trying to. एक वो चीज़ है ना, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि अभी जैसे इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ कि बहुत कम पोस्ट ऐसे मिलते हैं जहाँ पे आदमी ये बता रहा है कि यार मेरी अभी यही हालत है. सब ऐसा बताते हैं मेरी अभी यही हालत है बस. तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो वो नहीं है अपनी लाइफ में, शायद उन्होंने ये एक्सपीरियंस भी नहीं किया, बट उसका भी जो ऊपर का हिस्सा है ना वो उसको दिखा रहा है. यार बहुत सही पॉइंट है. तो वो सारे जो है तो सब जो है क्या है ना कि फिर वो जो दोस्त हैं, अभी जस्ट इमेजिन कि एक 17, 18, 19 साल का बच्चा है, ओके, उसके किसी दोस्त ने एक पोस्ट डाली, ठीक, अब उसने जो पहना है उसको मेंशन भी किया. तो जो साथ में जो दूसरे बच्चे हैं जो शायद उतने वेल टू डू फैमिली से नहीं है, उनके अंदर एक हीन भावना आती है. ठीक, अब वो जिसने पोस्ट भी किया है उसका क्या जुगाड़ है वो तो मालूम नहीं. ठीक है, तो सारे क्या होता है ना शादी में जो एकदम जो बेस्ट है कि बॉस यहाँ ना ये एकदम सेट है, यहीं क्लिक कर ले फोटो, भाई निकाल कैमरा, तो उधर करके आया और 14 फोटो में से नहीं वर्क नहीं किया, फिर 26 और निकाल. ठीक, तो वो निकाल के उसमें जो है उसके बाद फिर फिल्टर पे फिल्टर, जैसे सनी साहब की फिल्म है तारीख पे तारीख, फिल्टर पे फिल्टर मार के वो खुद को ही नहीं पहचान पाते ये हम है, और उसको वो पोस्ट करते. मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, द शो टब्बर की जो डायरेक्टर है अजीत पाल सिंह, तो हमने एक शॉर्ट फिल्म की थी बहुत साल पहले. वन माय फेवरेट डायलॉग्स इज फ्रॉम दैट शॉर्ट फिल्म. एक पति पत्नी के बीच में कुछ अनबन चल रही है एंड दे साइलेंट, ओके, वेरी साइलेंट, और एक क्लिफ पे बैठे हैं दोनों और पानी देख रहे हैं और नज़ारा देख रहे हैं एंड दे क्वाइट एंड शी सेज आई कांट बिलीव वी लिव लाइक दिस. सो माय रिस्पॉन्स टू हर इज वी हैव अ ग्रेट लाइफ एंड हर रिस्पॉन्स इज ऑन Instagram. One of the best dialogues I've ever read in a short film. Amazing. Everything is said in that, and वो चुप रहता है, उसका कोई जवाब ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ तुम्हें. You're right. Instagram पे हमने दिखाया है कि देखो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, but real life में है नहीं. So सारे वो जो illusionary image है उसको reality
बनाने की कोशिश चल रही है, वो उसमें वो बहुत कभी वो सारा, तब्दील नहीं होगा। हाँ, बहुत सारा ऐसा होता है जो आपकी जो मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको थोड़ा शेक तो करता है, तो वो है कहीं ना कहीं। यस, वेरी ट्रू। बट ऐसे कभी हुआ है कि बीइंग एन एक्टर, फैन पेजेस जो होते हैं वहाँ पे एआई के थ्रू फेस लगा लेते हैं एक्टर्स का, फेवरेट एक्टर्स का कुछ और वीडियो को, आपका कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ है, पता नहीं इनका, बट मेरे साथ तो नहीं हुआ है। बट आई नो कि बहुत जो बड़े बड़े मतलब बच्चन साहब का कुछ हुआ, आई नो कि अभिषेक का भी कुछ हुआ हाल ही में, आमिर साहब का कुछ हुआ, AK सर का हुआ, जैकी दादा का हुआ। सो कपल ऑफ पीपल हैव गॉटन दिस, वेरी स्कैरी यार। आई थिंक डीपी का भी कुछ हुआ ना, दीपिका का भी कुछ डीप फेक आया है। डीपी का डीएफ डीप फेक। रणवीर सिंह का हुआ है। रणवीर का हुआ। आपका? नहीं, बट actually talking about your character, पूरा नेगेटिव कैरेक्टर है यहाँ पर, एक स्टॉकर का कैरेक्टर है। How did you manage to play this character? I managed because of him. He shot me a certain way, he made me look a certain way, and he knew, I think he had seen me, he had seen my face, and he knew कि मैं इसको ऐसे शूट करूँगा, उसके फीचर्स ऐसे शार्प हैं, आंखें वैसे हैं, तो मैं ऐसे लाइट करूँगा। He knew it, and I just went with it, and मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं कुछ अलग करूँ, बिकॉज मेरे पास कुछ और है नहीं देने के लिए, बस वही है, एक ही चीज़ है मेरे पास कि मैं कुछ अलग करते रहूँ और उसमें मेरे खुद का इजाफा होता है एज एन एक्टर। एंड जब आपके ऊपर लाइमलाइट नहीं होती है ना इतना, तो यू कैन play around, you know, you can fail, you can fall, you can do, and you can get up again and work again. So that's the kind of situation of my career. हर एक एक्टर का अलग अलग जर्नी होता है, कोई एक्टर का सेम जर्नी नहीं है, हर एक एक्टर की अलग कहानी है। तो इसमें आई जस्ट रिलाइड ऑन हिम, एंड समवेयर हम लोग इंसान ही हैं, तुम्हारे अंदर सारे शेड्स हैं। ये नहीं कि अगर मुझे गुस्सा नहीं आता है रियल लाइफ में, बहुत कम गुस्सा आता है मुझे, बट आता होगा कभी ना कभी, तो वो शेड तो है कहीं ना कहीं, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। So somewhere that negative shade was there. He just Actually, that one of the great appreciation, he attended the Goa International Film Festival. One of the audience shouted, "Akshay, you are looking handsome." yeah. See, any villain, I think that appreciation I felt, it's a, you are talking at it's a negative and villain. No, the person who shouted, no, remember that. You, I think, you look very handsome. So I was so surprised that that appreciation comes for that. If it's really that villain, it's maybe that's the sense that they liked him. My PR Ahmed is there. Ahmed की जो बहन है Kainat, she saw the Kainat. I'm sure you know Kainat. Everybody knows Kainat. Everybody knows Ahmed and Kainat both. So KK, I call her KK, Kainat Khan. She finished the trailer because at that trailer launch she saw it. And हम निकले वहाँ से, and I looked at KK from a distance. She said, "You're looking so hot," which is something I can never imagine. You know, you're looking so hot. So yeah, I guess it lands on people differently. कहा जाता है ना कि शैतान जो होता है वो खूबसूरत होता है। अरे वाह यार, Another compliment. पहले तुमने फोमो करवाया, अब कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, और क्या नहीं, चाहिए? ये क्या सच इंटरव्यू है। है? ये सच है, शैतान जो होता है वो खूबसूरत होता है। तो जब भी विलेंस, अगर आप समहाउ नेगेटिव शेड करते हैं और वहाँ खूबसूरती है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा ही होता है। But actually, was it difficult? You know, I've done it before. I did it in Flesh. Siddharth Anand produced that. Not a lot of people watched it because Eros Now पे आया था और Eros ही बंद हो गया. But actually, Fighter वहीं से मिली थी मुझे, because Sid had produced it. I was a out and out villain in that. I was an out and out villain in Gurgaon. मतलब मैं पूरी फैमिली को basically मार डालता हूँ उस पिक्चर में. So I've done it before. This one had a lot of swag, you know, and I don't have swag. I'm swagless. देखो मैं कैसे बैठा हूँ, like I have no swag. So this guy had a lot of panache and swag and style. So that was hard for me. The villainish part wasn't very hard, but the attitude of this guy, you know, and वो मजे ले रहा है हर एक चीज में, वो पकड़ने बड़ा मुश्किल था। But about this, stalking की अगर बात करें, not in a bad way, obviously, in a positive way, आपने अक्षय को स्टॉक करने की क्या जरूरत है? क्या बात कर रहे हैं? लोग अक्षय को क्या स्टॉक बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? मैं तो रोज स्टॉक करता हूँ लोगों को, मैं देखता हूँ विनीत क्या कर रहा है।
देखता हूँ कौन क्या कर रहा है. Don't stop. Yeah, I'm sure I must have stalked people. I'm sure I must have like stalked in the way, in like not a disgusting, creepy way, but I must have met somebody, found them attractive, and gone on Instagram and found their account and been like, अच्छा, हाँ, खूबसूरत तो है. I must have done that. Well, I have done that. Recent account you have stalked? Recent account I have stalked. No, I don't think I can't even think of one. नहीं तो आ जाता ना. मैं इतना बड़ा स्टॉकर हूँ नहीं यार, मतलब ऐसे मत करा. नहीं, अगर कैरेक्टर प्रिपेयर करने के टाइम पे अगर स्टॉकिंग. इसका मतलब अगर कोई आदमी सीरियल किलर है तो वो लोगों को मारने लग जाए. No, I don't. पीछे मैंने पहले बोला in a positive way stalking. Oh, you know whose account I stalked recently? Varun Dhawan's. Because I'm working with him now, and he's a lovely guy. Have you met him? इतना charming आदमी है वो. He's so charming. He won me over. Like I really fell in love with the personality. Like उसको, he's so gentle. He's chill. He doesn't carry his stardom with him. पता ही नहीं चलता अच्छा वरुण बैठा है यहाँ पे. You know, he doesn't carry it with him. So I fell in love. मुझे बड़ा वो प्यारा लगा बंदा. So I went to his Instagram. I followed him and I just started going through it. So that's my recent account that I stalked. And one more information I have to give. This character, original, got a Filmfare Award. Yeah, so I'm also going to get it. So that Congratulations in advance. Thank you. Thank you. Next So, Thank you. Thank you. exclusive one. Exclusive one for my win. so Apart from this, जैसे कि आपने अभी earlier mention किया था about the scam and all, जैसे कि बहुत scam होते हैं, phone call होता है, link पे click करना होता है, ऐसी कोई scam आप लोग ने personally face किया? यार मैं मेरी एक दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है मेरी, married to one of my best friends. She was born and brought up in America. She's a white lady. Very intelligent. She runs her own business with a partner and very successful in that. उसको परसों किसी का फ़ोन आया और उस फ़ोन कॉल इतना elaborate setup था ना वो. There was a lawyer, there was a police officer, all these things, and they basically played on her fear कि तुम्हें हम इंडिया से बाहर निकाल देंगे, तुम अमेरिकन सिटीजन हो, तुम ये हो वो, बच्चे से अलग कर देंगे, पति से अलग कर देंगे. तो वो डर गई और 6 घंटे उन्होंने बात की फ़ोन पे. And by the end she shared more information than she should have, and then she got embarrassed कि मैं किसको क्या बताऊँ, you know, because लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. So it just happened to her, like, and then we are promoting this film. So she didn't want to watch the trailer. I sent it to her. She said, "मैंने देखा." No chance. Like no chance I'm watching it. And you're the stalker in it, so. मेरा ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस मेरा नहीं. see, I hear a lot of stories actually. I have a lot of friends in bureaucracy, and that whatever the stories when they are telling me, what I understood is, I think the scammers are the best performers on earth, I believe. Yeah. Because they'll create that ambience where, because they have narrated one story that they actually one family wanted to take job. I mean, give them job. Some workers. They travel from Calcutta to Mumbai. Okay. So that guy got the tickets and everything from them. When they traveled, they are saying that we reached Nagpur, but railway police, they took us. Why? No, because we had a small stove. We brought the stove, and then just now the railway police. So that person they felt it. Oh, we only brought the employees. They are stuck. When they hear, they have the railway track sound and everything, and the station master comes and the police is asking, no, this your employees carried that stove. We are going to arrest them. So that performance, that guy explained to me, it looks like that exactly that guys, they never traveled. They were sitting there in Calcutta. They create the whole ambience. Now the police is asking that, no, if I put in jail, that our life will gone. They're asking 10,000 rupees. So they hear that no sound, railway track, and the police inspectors calling. So believable. So believable. So now imagine that. So this audio, that's what our film is about. When you see the film, you feel that that's a different world. So not necessary to be, in the video. That audio itself, they're creating that whole ambience, like exactly they stuck with this. The particular person sent the 10,000 rupees. Arey. See?
Yeah. So Fear. that they, when they narrated the story, they're not left. Then what is happening now? That they're from Nagpur to Mumbai, they are traveling. They are traveling. No, next day they are not come. What they're saying, even after getting the money, they made us to wait, so we missed the train. So we want to go back to Calcutta. Please give some money. That is the time they had a doubt. Then they checked, and with various some other sources, they have not left Calcutta. So now, see, I'm not talking about ladies. I'm not talking about girls. Even this particular person, educated person. Yeah. See, there is no gender. The cheating never involves with the gender. It will victims all over, male, female, all the people, everyone. If you miss it, no, I think you will lose. Either money or your peace or your credibility, anything will happen. So that is what I think we are trying to create, that awareness. That's it. So before ending this conversation, Urvashi को FOMO है, उससे पहले question उनके लिए कि मतलब how was the experience working with Urvashi? Horrible. Worst. Terrible. So ask her to come and reply for this. Come and reply for this. Yeah. I mean, no, and I think she was wonderful. I think she. I don't know how many. I don't know how many films she has done, but she came very nervous. That's my memory of her. She was very nervous. हर एक scene में वो काफी nervous थी. And I hope she's happy with her performance, because I know you're happy and I know the audience or whoever's watched is quite happy. But that my only thing was that she was so endearing and nervous all the time that, you know, Vineet also, being experienced in season, would work on her dialogues, and I also tried. I hope she's happy. That's all. Final result, because of him, yeah, is nice. But हाँ, सीन में थोड़ा मतलब उर्वशी का अपना एक तरीका है. हाँ, तो मुझे लगता है कि उसमें वो नर्वसनेस somehow कहीं ना कहीं हर सीन में. हाँ. Yeah. But final result is nice. It actually somewhere it works because she's nervous in the film. You know. Yeah. Maybe she was That support in the is exactly. character throughout the time. क्या बात है, क्या काम अब किसी को बोलना पड़ेगा. क्या बात है. So So somehow the that biggest- worked. I think the biggest challenge is that converting her into this homely look. No, that was a little challenging. No, normally Character yeah. He Basically, used to remove her. Basically, what he's saying is she Makeup would and come with all. makeup, and he would say no makeup. So she would go back to the van and she'd come with 5% removed makeup. So he'd say no makeup. So she'd turn around, go back, and come with 5% less even. So somewhere he used to say, okay, I've got to shoot, just come. Correct. Lastly, so what's next for you guys? I am right now shooting Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari, which I just mentioned with Varun and Janvi, and Shashank Khaitan is directing that, and I'm starting another film in about a week, and yeah, that's what I'm working on. आपको direct yeah, just we are working on some big period drama. So hopefully, I think it's a big film. हम दोनों कास्ट कर रहे हैं. Yeah. just checking, just making sure. एक शो है कबीर खान सर का अमेज़ॉन के लिए, रंगीन. एक फिल्म है एक्सेल एंटरटेनमेंट की, रीमा कागती की फिल्म है, सुपर बॉयज़म मालेगांव, जो अभी टिफ के लिए सेलेक्ट हुई है. एक और फिल्म है मैच फिक्सिंग, थिएट्रिकल रिलीज, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स. एंड एक और फिल्म है छावा. एक और फिल्म है एंथोलॉजी. एक अनुराग सर की फिल्म है जो शूट कर रहा हूँ, और एक और फिल्म है उसके साथ जो शूट कर रहा हूँ. Wow. ओके, All the best then. थैंक यू It was सो lovely मच. talking to you. Likewise. मिलते हैं next interview पे. जरूर, Thank you बिल्कुल. so much. Thank you.